Properties of cube roots of unity. Number 1, each complex cube root of unity is square of the other. Square of the other. Proof. Let -1 plus square root of 3 iota over 2 is equal to omega. Then omega square is equal to -1 plus square root of 3 iota divided by 2. This is equal to -1 plus square root of 3 iota whole square over 2 square. This is equal to -1 square use this formula. A square plus 2ab plus b square. -1 का square plus 2, value of a is -1, value of b is square root of 3 iota plus square root of 3 into iota divided by square of 2 is 4. This is equal to square of -1 is +1. 2 into -1 is -2 into square root of 3 iota plus square of square root of 3 into iota is square root of 3 into iota square divided by 4. This is equal to 1 minus 2 square root of 3 iota plus 3. The value of iota square is -1 over 4. This is equal to 1 minus 2 into square root of 3 iota minus 3 over 4. 1 minus 3 is equal to -2 minus 2 into square root of 3 iota over 4. अब यहां से 2 को कॉमन ले लेना है. 2 को हमने कॉमन लिया तो बाकी आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 4. इसको कैंसिल करना है इसके साथ. क्या आ जाएगा? यहां पे 1 और यहां पे 2. दिस इज इक्वल टू -1 माइनस square root of 3 into iota divided by 2. Now, this is the value of omega square. And this is the second complex root. This is the second complex cube root of unity. Now,
square of omega square is equal to -1 minus square root of 3 iota over 2. This is equal to -1 minus square root of 3 iota divided by square of 2. यहाँ भी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, a over b whole square is equal to a square over b square. Now this is equal to, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 जो है इसको कॉमन निकाला तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4. स्क्वायर ऑफ 2 इज 4. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ -1 square of 1 plus square root of 3 iota over 4. Now square of -1 is 1. यहां पे फिर हमने फार्मूला अप्लाई करना है a plus b होल स्क्वायर वाला, a plus b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई दोबारा करना है यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है हमने. तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा और प्लस आएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ओवर आ गया 4. अब दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और यह आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. तो अब 3 आयोटा का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, ये बार बार हमने इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर हमने लेना है तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर और ये इक्वल है 3 के और ये इक्वल है -1 के, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3. यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और इसके नीचे है 4. दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 1, ये इक्वल आ जाएगा -2 के प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4. अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, 2 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लेना है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसके नीचे 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4. अब इसको कैंसिल करें इसके साथ, यहाँ पे 2 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और इसके नीचे आ जाएगा 2. तो ये ओमेगा के इक्वल है. तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर.